May Allah bless and keep you safe, keep you safe. May Allah bless and keep you safe. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Amma ba'd, fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. The Islamic brothers and viewers of Madani Channel, once again we welcome you in Silsila Mental Health Matters. हम एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं सिलसिला मेंटल हेल्थ मैटर्स में, और आज का टॉपिक भी बहुत मुनफरिद, इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को। जी, मदनी चैनल के नाजरीन, हम एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो कि स्ट्रेस से ताल्लुक रखता है। जब हम किसी भी खतरनाक हादसे को जो है वो हमें दरपेश होता है या हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसके बाद एक जहनी अजियत, तनाव किसी कैफियत हम फील करते हैं, एक स्ट्रेस में हम चले जाते हैं। ये क्या है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर? आज इसके बारे में हम सुनेंगे, इसकी अलामात क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं, और इसको हम किस तरीके से जो है वो टैकल कर सकते हैं। हाउ कैन वी टैकल इट, व्हाट इट इज, what are the symptoms, and hopefully we'll be talking about this topic, what is post traumatic stress disorder. The Islamic brothers and viewers of Madani Channel, before we proceed ahead towards our main topic, let's do a few good intentions. It is the saying of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, Niyatul mu'mini khayrun min amalihi, meaning intention of a believer is better than his actions. Whenever you perform any good deed, a lawful act, permissible work, then always make good intentions. Why? Because inshallah it will help you to multiply the reward what you're going to attain, inshallah azza wa jal. And if you don't make intention at all before doing any permissible or good deed, you are not rewarded. The Islamic brothers and viewers of Madani Channel, the very main intention of doing this silsila, rather the whole series we have been doing about mental health matters, is to do help our Muslim ummah, our brothers and sisters out there who can gain awareness, who can gain knowledge, and that could benefit them, or it could benefit those who are the sufferers or those that are living around them. Inshallah azza wa jal, it may help all of us. So inshallah, I make an intention to deliver this silsila for the pleasure of Allah tabarak wa ta'ala, inshallah azza wa jal. And I want you to make an intention that you will listen from start till end for the pleasure of Allah tabarak wa ta'ala. You will remember what you learn and you will pass this knowledge on to others too, inshallah. अच्छी नियतों के साथ इस सिलसिले में हमारे साथ रहिएगा, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हमारे साथ माशाअल्लाह मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीनत अत्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इंफॉर्मेटिव सिलसिलों में माशाअल्लाह हमारा साथ रहा है। एक और मुनफरिद खूबसूरत टॉपिक के साथ हम आज फिर हाजिर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, Rizwan bhai? Alhamdulillahi Rabbil Alameen, ala kulli hal. Thank you very much once again. MashaAllah, you've given us a precious time once again. A very important and a crucial topic today, which is post-traumatic stress disorder. What would you like to talk about it initially? Bismillahir Rahmanir Rahim. Post-traumatic stress disorder, very difficult name. It is abbreviated, or in short term it is called PTSD. Not many people would have actually heard about this, but when we actually describe it, many of us will relate to this. Many viewers of Madani Channel will actually relate to this particular problem and some of the symptoms that they may find. And obviously there's always a reason. I could have chosen lots and lots of different topics, but why did I choose some of the specific ones? Post-traumatic stress disorder is actually becoming more common. Why it is becoming more common? Obviously, the situation around the world is changing. The world, sadly and unfortunately, has become a more violent place. People are being killed on a daily basis. There are more and more traffic accidents. There are obviously terrorist activities. There are more earthquakes happening. The buildings are falling. People are being trapped. They are dying. These are all
traumatic events that actually induce a lot of mental trauma to an individual who is either a victim of these accidents or those who may be dealing with the aftermath of these accidents. So this causes a lot of trauma, and after the initial trauma they may face lots of mental health problems, which is what comes under post-traumatic stress disorder or in short terms PTSD. मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है कि दुनिया के हालात बदतरी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और कहीं पे बम्बार्डमेंट हो रही है, बम बरसाए जा रहे हैं, कहीं पे लोगों को कत्ल किया जा रहा है, किसी को जो है वो हादसाती तौर के ऊपर इस किस्म के इवेंट्स हैं, तो लोग जब इन वाकयात को, हादसात को एक्सपीरियंस करते हैं या उसका विक्टिम होते हैं, तो उसके बाद कुछ चीज़ें उनके जहन में थब्त हो जाती हैं और वो मौत को बहुत ही करीब से देखते हैं। जब वो मौत को बहुत ही करीब से देखते हैं तो फिर वो चीज़ जो उनके दिमाग पे बैठ जाती है और वो इसका जो इवेंट है इतने गहरे असरात मुरतब होते हैं कि वो इस चीज़ को लेकर जो है वो ट्रॉमा की कंडीशन में चले जाते हैं, जहनी तनाव की कंडीशन में चले जाते हैं, जहनी अजियत की कैफियत में चले जाते हैं। और आज इसी टॉपिक को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। रोशन, आप क्या बताएंगे कि ये जो जहनी तनाव, अजियत किसी भी खतरनाक हादसे की वजह से होता है, इसको आपकी फील्ड में पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर जो कहा, स्ट्रेस डिसऑर्डर जो कहा जाता है, मदनी चैनल के लिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए उर्दू मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए। सबसे पहले तो ये है कि इसकी डेफिनेशन के एतबार से कि मतलब क्या जो है ना, इसमें दो तीन डिफरेंट चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इवेंट होता है या जो हादसा होता है, ये जो है ना बहुत ही सिग्निफिकेंट किस्म का होता है, बहुत ही सीरियस किस्म का होता है। जो भी बंदा इसमें विक्टिम होता है या जो इसके साथ डील कर रहा होता है आफ्टरवर्ड्स, तो वो मौत को जो है ना बड़े करीब से देखते हैं। जैसे आपने कहा, मिसाल के तौर पर अर्थक्वेक हुआ, बिल्डिंग गिरी, आप ट्रैप हो गए उसमें, जख्मी भी हैं, अब पता नहीं है कितने दिन गुजर जाएंगे, इससे पहले ना आप बोल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, हो सकता है जो है बेहोशी की कैफियत हो, और अब आप पड़े हैं इसमें, आपको पता है ना बोल सकते हैं ना कुछ, अब ये भी नहीं मालूम कि कब कोई आके आपको जो है वो यहाँ से निकाले। तो अब आपको समझें कि यकीनी तौर पर आप समझते हैं कि बस अब मैं यहाँ पे ही मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। या मिसाल के तौर पर मतलब दहशतगर्दी का वाकया हो गया, ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया कि सीरियसली आप इंजर हो गए और आपको अब ये यकीन हो गया कि बस अब मैं गया, अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। और इसी तरह की दीगर मिसालें, मिसाल के तौर पर अमूमन यानी कि अफवाज, मुसल्लह अफवाज जो हैं, जब ये लड़ाई करती हैं तो बहुत सारे सोल्जर्स वगैरह जो है वो या तो खुद गन शॉट के विक्टिम होते हैं या मतलब बम एक्सप्लोड होते हैं, तो वो अपने मतलब जो है वो साथियों को जो है वो उन हवाले से, वो उनके जिस्म के हवाले से जो भी मतलब उसको एक्सपीरियंस करते हैं कि वाकई बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट होते हैं। या तो आपको अपनी मौत यकीनी नज़र आती है या जिनको देखा है वो मौत का शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ सर्टन प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स हो गए, कि जो इस तरह के ट्रॉमा विक्टिम्स को ट्रीट करते हैं, या मतलब फायर ब्रिगेड वाले हो गए, एम्बुलेंस सर्विसेज वाले हो गए, इसी तरह से जो है वो इस तरह की जितनी भी ट्रॉमा सर्विसेज हैं, इनमें जो काम करने वाले होते हैं, ये बजाते खुद हादसे का तो शिकार नहीं होते, लेकिन अब जब हादसे के वहाँ जाए वकूफ़ पे जाते हैं, अब आगे वहाँ पे क्या हालत होती है, हर किसी का दिल गुर्दा इतना नहीं होता। बहुत सारे लोग जो है वो खाली खून को देखकर जो है वो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन अब ये लोग जो है इनको अपनी ड्यूटी भी पूरी करनी होती है। इमरजेंसी सर्विसेज के हवाले से देखा जाए तो अब पुलिस वाले हो गए, ये भी मतलब बाज़ सूरतों में बहुत मतलब जो है वो अज़ियतनाक हादसात का, यानी कि ये जाकर इनको लोगों की मदद करनी होती है। तो अब ये जो है ना, ये सारी चीज़ें जो ट्रॉमा है, ये जैसे आपने कहा कि जहन पर शब्द हो जाता है, इसकी अलामात क्या हैं, उससे पहले मैं थोड़ा ये इंग्लिश में कर दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल for post-traumatic stress disorder to be identified or diagnosed, the trauma, the nature of the trauma has to be severe, where either your own life has been threatened and you have faced death very closely. For example,
an earthquake happened, you were trapped inside the building, you are injured, you cannot call out, a day has passed, you don't know when you will be rescued or not, and clearly in that state you are convinced that you are going to die. Or a severe road traffic accident, you are involved in it, you are bleeding, you are severely injured or wounded, and you think that that is it, I am actually going to die, I'm not going to survive this. Or terrorist activities you are involved in. So an event has to be of severe nature where you believe that you are going to die. And this is the actual nature, that when events like these in your life happen, then they actually cause post-traumatic stress disorder. Now, immediately you may not feel some of the symptoms that we will describe later on, but it may take about a month or up to 6 months for these symptoms to develop. तो अब जैसे ये हादसा हुआ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस हादसे के साथ ही आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाए, जिसकी अलामतें अभी हम बयान करेंगे. ये हो सकता है कि 1 महीने से लेकर 6 महीने बाद तक जो है ये जो है वो आपको जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस हो. पहले आप होंगे, एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन होता है एक टर्मिनोलॉजी, कि हादसे से लेकर 4 हफ्ते तक जो है वो आपका एक पीरियड होता है कि जिसके बाद आप उमूमन नॉर्मल हो जाते हैं. लेकिन अब अगर ये नॉर्मल नहीं होता तो हो सकता है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की जो है वो अलामतें हों. और सब अभी हम आते हैं इसकी सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अब जैसे कि आजकल के हालात है जो दुनिया में हो रहा है, दहशतगर्दी भी बहुत ज़्यादा है और आए दिन हम देखते हैं कि हमारी पुलिस फोर्सेस को भी जो है वो आए दिन बम धमाकों का बेचारे शिकार हो जाते हैं. जो हमारे मुहाफिजीन हैं उनकी जान भी खतरे में है. हमारी मुसल्लह अफवाज हैं जो अपनी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, वो भी जो है इस मामला का शिकार हो जाते हैं. बहुत सी माओं के बच्चे उनसे बिछड़ जाते हैं, दहशतगर्दी का शिकार हो जाते हैं. और कभी लिसानी के उसके नाम के ऊपर, कभी जो है वो सियासत के नाम के ऊपर, कभी किन किन चीज़ों के नाम के ऊपर जो है वो लोग जान ले लेते हैं. और देखने वाले जिनके सामने ये सब हो रहा होता है, जिसके सामने ये फायरिंग हुई है, जिसके सामने ये हादसा हुआ, ये बम धमाका हुआ, ये दहशतगर्दी हुई, वो जो अपने दिमाग के ऊपर इस स्ट्रेस को ले लेता है, इसके बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये इसकी जो अलामात है फिर कैसे जाहिर होंगी? जैसे अभी आपने थोड़ा सा बताया कि इनिशियली कुछ अरसे में होंगी, लेकिन ये तो हर एक के साथ होगा, थोड़े अरसे के बाद वो ठीक हो जाएगा, वो फिर दोबारा नॉर्मल सिचुएशन में आ जाता है. लेकिन कुछ लोग इसको कोप नहीं कर पाते और ये जो है जिसे आप कह लें कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, ये प्रोलॉन्ग कर जाता है. तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि So initially, as we said, acute stress reaction may be that you may have mood problems, you may not be feeling happy, you will be sad, you may have sleep difficulties or not eating properly, and slowly it will go away and that is the end of it. However, in post-traumatic stress disorder, what happens is that you continue to relive that experience. Your brain has not been able to process those traumatic memories. It has not been able to deal with this significant event. So consequently, so once your brain has not been able to process with this, consequently what happens is that you relive that experience. How do you relive that experience? Is that during the daytime when you are awake, you may get what we call as flashbacks. What does flashback mean? You actually, in awake state, you think about that event. You visualize those images of that event. You can actually hear those sounds at that time. You may be able to feel the sensations of that time, the painful experience that you had. Out of nowhere, you are far away from that event. Time has passed, but in your memory, in your own mind, you are still living that experience whenever your mind thinks about that. And during the night when you go to sleep, this happens in terms of the nightmares. So you will actually be having a nightmare about that particular event. It will rekindle the memory. It will refresh the memory in your mind. It will arouse those feelings of painful experience. It will actually make your heart feel fast, or beat faster. You will feel palpitations, you may be sweating, you may suddenly wake up during the night time, and clearly this will actually be
very disruptive to your normal sleep pattern. So first symptom, or one of the three main symptoms of post-traumatic stress disorder, is flashbacks or nightmares. Now, what happens is that the second bit is that because these reliving experiences, whether in the form of a flashback or a nightmare, they are painful. You would like to avoid these painful experiences. Rather, I was just reading about that even you feel the taste, even you feel the sounds, and even you feel what you had experienced. It happens. Is it true? What do you think? Yes, I mean, human mind, human brain is an amazing creation of Allah Azza wa Jal. And you can actually feel those painful experiences and the sounds and the taste and the smell and so forth. Now, what happens is that any sound similar to that, any smell similar to that, any place similar to that, or anything that was associated around that event, you will try to avoid that. You will not take the road that leads to, let's say that it was a traffic accident. There was ambulance siren noise. It is possible that that may trigger your memories back to that. A particular time or particular people who were there, if you actually are with them, or if anyone talks about this event, it will trigger your painful experience, and you may start getting flashbacks. You will consequently try to avoid all of these stimulus that can actually make your mind think back to that experience. And this avoidance means you will not go out mostly. You will not talk to other people and not socialize, because anyone could ask you about that event, and that will actually make you relive that painful experience. So this avoidance, which will affect your, if you are going to work, it will affect your performance at work. You may not be able to go to work. You may not be able to socialize. You will simply be sitting in your own home in the worst case scenario and reliving all those experiences, but trying to at the same time avoid these other stimuluses so that you don't end up having the flashbacks. So flashbacks and avoidance, it is going on at the same time. And the third thing is what we call as hypervigilance. Hypervigilance means that even the smallest level of noise may sort of give you a startled reaction. Right. Someone opens the door and suddenly you actually, let's assume that the traumatic experience was a burglary. Okay. So anyone knocking on the door may make you hyper vigilant. You may jump. Or anyone trying to open the door, you may jump. So this is called hyper vigilance, and you startle reaction, or you become sort of like, on the edge. So constantly you are in this state of bodily tension. And so these are the what we call as three main features of post-traumatic stress disorder. Reliving the experience in terms of flashbacks, memories, then trying to avoid it, which affects your normal life. And thirdly, you actually become in this very tense state all the time. Smallest amount of sound, smallest amount of anything that is related to that event, it will actually make you hyper vigilant, and obviously someone in this state will not be able to function normally. जी माशाल्लाह। और सब आप उर्दू चैनल के मदनी चैनल के नाज़रीन जो है उनके लिए इसको हम थोड़ा सा अलामात को उर्दू में भी थोड़ा आपसे चाहेंगे कि आप एक्सप्लेन कर दें। एक तो आपने जब अलामात का जिक्र किया है तो फ्लैशबैक्स का आपने जिक्र किया है कि जब इंसान किसी ऐसे इवेंट को याद करता है और उसको उसकी याददाश्त जो है ना वो दोबारा से लाइव हो जाती है, वो उसको दोबारा से वो समझता है कि यार ये कोई जगह देख लेता है, या उस तरह की स्मेल को वो सुनता है, या वो कोई ऐसी साउंड दोबारा वो सुनता है, तो उसको दोबारा से वो उसी ट्रॉमा की कंडीशन में, स्ट्रेस की कंडीशन में उसको दोबारा उसके फ्लैशबैक्स आने शुरू हो जाए। यूं लगेगा कि जैसे मिसाल के तौर पर
ٹریفک کا حادثہ ہوا, ایمبولینس آئی تھی, اب جب بھی وہ ایمبولینس کی آواز سنے گا سائرن کی, وہ اب ہو سکتا ہے کہ اسے جو ہے وہ بالکل یوں ہی فیل ہو کہ واپس وہ اس ایکسیڈنٹ کی کیفیت میں ہے, درد کی بھی شاید اس کو جو ہے وہ ذہن میں اس کا احساس ہو, اور ظاہر ہے کہ مطلب جو ہے وہ یہ دوبارہ اس کے لیے ایموشنلی ٹروما ہوگا. تو یہ اس کو بولتے ہیں کہ فلیش بیکس, کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح دوبارہ سے یاد آ جاتی ہے, اور یہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دن میں کئی مرتبہ ہوتا ہو, یا ہو سکتا ہے کہ ہفتے میں کئی مرتبہ ہوتا ہو, ضروری نہیں کہ جو. تو اب دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ اب دیکھیں انسان کی ایک فطرت ہے نا, کوئی بھی آپ کے سامنے مشکل کام آیا ہے نا, اور آپ کے لیے وہ پینفل ہے یا ایموشنل ہے, تو آپ کیا کریں گے, اسے اوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یوں ہی کیا ہوگا کہ اب یہ بندہ اوائڈ کرنا شروع کرے گا کہ یار میں کسی طرح سے بھی جو ہے نا اس سچویشن سے بچوں. تو اب مثال کے طور پر یعنی کہ یہ گھر کے اندر رہے گا کہ نہ مجھے ایمبولینس کی سائرن کی آواز آئے, نہ میری وہ میموری ہو. بعض دفعہ لوگ باتیں کرتے ہیں اس حوالے سے, یا بعض دفعہ پرٹیکولر جگہ یا لوکیشن جو ہے وہ آپ کو یاد دلا دیتی ہے اس ایونٹ کی. اب آپ اس جگہ اور لوکیشن پہ جانے سے اجتناب کریں گے, یا کوئی بھی روٹ اگر اس کی طرف جاتا ہوگا آپ اوائڈ کریں گے. بعض دفعہ مطلب مثال کے طور پر کبھی ایسوسیشن اس طرح بھی ہو جاتی ہے کہ کوئی اسمیل یا کوئی ٹیسٹ یا کوئی اس طرح کی کہ جس سے اس کی میموری جو ہے وہ واپس اس ایونٹ کی طرف چلی جاتی ہے, تو وہ اس کو بھی اوائڈ کرنے کی کوشش کرے گا. اور اب ہوگا کیا کہ یہ بندہ باہر نکلنے سے بھی گریز کرے گا, کیونکہ باہر نکلنے میں کبھی لوگ پوچھ لیں گے یا کبھی اور کوئی اس کی میموری آ جائے گی, یہ وغیرہ ہوگا. تو اب یہ بندہ اپنے گھر میں ہی جو ہے سمجھے کہ قید ہو کے رہ جائے گا, اور یہ اپنی نارمل زندگی نہیں گزار سکے گا. تو یہ اوائیڈنس جو ہے وہ ہر چیز سے جو ہے وہ بچے گا. تو نہ لوگوں سے ملنے کے لیے جائے گا, نہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے گا. تو یوں جو ہے وہ اس کی زندگی جو ہے وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر قید ہو کر رہ جائے گی, جو کہ اس کے لیے اپنے لیے بھی جو ہے وہ ایک تکلیف کا سبب ہے. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو بولتے ہیں انگلش میں کہ ہائپر ویجیلنس, کہ مطلب آپ جو ہے نا چھوٹی چھوٹی سی آواز پر جو ہے وہ جمپ کر جاتے ہیں, اور آپ کا دل تیزی سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو پسینہ آ جائے, خوف کی کیفیت آ جاتی ہے. مثال کے طور پر کسی کے گھر مطلب ڈاکہ پڑا ہو نا, جو ایک اسٹریسفل ایونٹ ہے, تو اب مثال کے طور پر کسی نے دروازے پہ ناک کی, وہ آپ جو ہے وہ آپ کی کیفیت جو ہے وہ تھر تھرانے والی ہو گئی, جناب جی ہارٹ بیٹ کرنا شروع کر دیا, سویٹنگ ہو گئی, یا بیٹھے ہوئے جمپ کر دیا, تھوڑا سا ادھر سے کچھ گرا تو جلدی سے دیکھا کہ ادھر کیا ہے. تو اب دوسرے بھی اس کو نوٹ کرتے ہیں, سٹارٹل ریئیکشن بولیں اس کو. اب یہ کیا ہے کہ یہ آپ کے پٹھے کھچے ہوں گے, ذہنی ہر وقت جو ہے وہ دباؤ رہے گا, تو آپ بالکل مطلب ایک نارمل یعنی کہ ریلیکس فیل ہی نہیں کر سکتے. تو یہ تین مین علامتیں ہیں کہ ایکسپیرینس کو ریلیو کرنا, جس کو فلیش بیکس بولتے ہیں, پھر ان چیزوں کو اوائڈ کرنا کہ جو آپ کو یہ میموری کی یاد دلائیں, اور تیسرا یہ کہ یہ جو مینشن ہوا ہائپر ویجیلنس اسٹیٹ, یہ تین چیزیں ہوں تو ڈاکٹر پھر کہتے ہیں کہ ہاں جی آپ کو پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے حوالے سے آپ ذرا بیان فرمائیں کہ اس کے نقصانات ایک پرسنل لائف کے اوپر کیا ہو سکتے ہیں, اور ایسے انڈیویجول کے ساتھ جو رہنے والے ان کی زندگی کس طرح متاثر ہوتی ہے, اور بالخصوص اس شخص کی اپنی زندگی وہ کتنی زیادہ متاثر ہوتی ہے جب اسے پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ جیسے علامات میں بیان کیا گیا کہ ایسا بندہ جو ہے وہ کلیئرلی یہ پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر ان اٹ سیلف از اے میجر مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر, کہ یہ ایک میجر مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہے پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر. آپ اس کو سویئر اینگزائٹی کا بھی نام دے سکتے ہیں, سویئر ڈپریشن کا بھی نام دے سکتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ نہ آپ باہر جانا پسند کریں گے, بہت ساری چیزیں آپ اوائڈ کرنا شروع کر دیں گے, کام بندے نہیں کر سکتے اکثر, اور اسی طرح اگر بچے ہیں ان کو وقت نہیں دے سکتے, دوستوں سے دور ہو جاتے ہیں, فیملی سے دور ہو جاتے ہیں, گھر کے اندر قید ہو کر رہ جاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اس سے کلیئرلی سمجھے کہ بندہ مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے. یعنی بسا اوقات تو پتا ہوگا کہ کسی نہ کسی ایونٹ نے اسے متاثر کیا ہے, ہو سکتا ہے کچھ ایسے سیویئر
इवेंट्स हुए हों जिंदगी में जिसे इंसान डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। बहुत, जिसे आप कह लें कि हो सकता है कोई जिनसी तौर के ऊपर किसी को तकलीफ पहुंची हो, उसे मुतासिर किया गया हो और वो उस स्ट्रेस से गुजर चुका है और वो किसी को बता भी नहीं पा रहा और वो अजियत का शिकार है। तो इसकी वजह से जो है ना वो दूसरे समझ नहीं पा रहे उसकी कैफियत को और वो भी नहीं समझ पा रहा, यानी मैं किसी को बता भी नहीं सकता और स्ट्रेस में है। तो इसको मतलब इसकी वजह से भी जो नुकसान होते होंगे फैमिली लाइफ में, जिंदगी में, गिरद नवा में रहने वालों के हवाले से, उसके बारे में आप क्या इरशाद फरमाएंगे? किसी तरह के भी इवेंट, चाहे वो जाहिरी तौर पर दूसरों को भी क्लियरली नजर आता हो कि ये अजियतनाक है, ट्रोमेटिक है, या वो बज़ाहिर जो है वो जिसके साथ ये हादसा हुआ उसके माइंड ने ये परसीव किया कि ये जो है वो ट्रोमेटिक इवेंट है, और बिलखसूस जो है ना वो इसमें ज़ाहिर है कि अब हम मदनी चैनल पे ओपनली हर चीज़ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसी तशद्दुद के हवाले से कि बाज़ दफ़ा ऐसी और उनके लिए भी ये पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। बच्चों के साथ भी ऐसी चीज़ें बिल्कुल हो सकती हैं और वो भी पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की तरफ जो है वो चले जाते हैं। The question was asked that if I could translate it in English, that what is the impact of post-traumatic stress disorder? And as we discussed from the symptoms of post-traumatic stress disorder, that this individual is trying to avoid. He's not going to go out. He will be in the state of anxiety and hypervigilance all the time. His mind will not be at rest. He will be in a tensed state. You can call it worst anxiety. You can call it worst depressive symptoms. This individual, if he is of working age, he will not be able to actually do his work. If he is going to college to study, he will not be able to actually continue with his studies. So basically this individual becomes a prisoner in his own mind, in his own home. And clearly this is the biggest impact. If he is the main breadwinner of the family, the whole family will actually suffer as a consequence. And this individual on his own will obviously suffer hugely unless he actually gets the treatment for this. And you mentioned obviously the some events which sometimes the actual individual is not able to disclose for a number of different reasons. The event can be traumatic in the eyes of others who are actually looking, and everyone can say that yes, this is a traumatic event and significant event. But at the same time, what may not appear as traumatic event to others, but if the victim perceives it in his mind as obviously either a big insult to his dignity or her dignity, that is another big trauma, mental trauma. Particularly, I mean, obviously we cannot open everything, openly, because we are on Madani Channel and there are different views, sitting down, family together, children may be there. But sometimes obviously Islamic sisters may have experiences in their life, or young children may have experiences in their life where, abuse in different forms can actually become a big trauma. Domestic violence, as last episode that we actually discussed, can lead to a lot of emotional trauma, and some children may actually suffer post-traumatic stress disorder as a result of severe domestic violence that they have witnessed between their parents or to themselves as well. So clearly, event, as long as it is perceived by the individual to be of significant nature, either a threat to their life or a threat to their dignity, that can lead to post-traumatic stress disorder. May Allah bless and keep you safe, keep you safe. May Allah bless and keep you safe.